Hello everyone, I am Dr. Mayukh Hazra. I got admission into Maulana Azad Medical College. I took their admission also and I left Maulana Azad Medical College. Most of you, my subscribers, you know that I got admission and I sent a video also, uploaded a video also regarding the Maulana Azad Medical College admission. But after that, I went deactivated for 2 months. After that, I returned. But you know that I have left Maulana Azad Medical College. So why did I leave? Before judging me as a psychopath, do listen to my whole story in this video, okay? And if you have not subscribed to my channel, dear, do subscribe it to get quality medical content. I don't know if you know or not, but my story is not unique. Maybe my reasons are unique. Maybe my reasons are a bit different from others. But this year also, one has left AIMS Delhi Medicine. AIMS Delhi Medicine, getting a top 10 rank. And another person is planning to leave medicine from AIMS Delhi. Likewise, many people have resigned from VMMC and top institute. So it's not a unique story. But my story is unique, as I said. So let's dive into it. And so I got AIR 29 in NEET PG 2023, and I gave INICET also, but it was a nightmare for me, I would say. My INICET was a nightmare for me. My rank came very bad. It was 684 rank. I had 3 dream institutions in my mind and my stream was fixed. It was dermatology. I am a passionate about dermatology and I needed the work-life balance that's present in dermatology residency, I felt. So the 3 premier institutes, first comes the AIMS Delhi, second comes the Maulana Azad Medical College, and the third comes the AIMS Bhubaneswar. As you know that my INICET rank was not good, so AIMS Delhi and AIMS Bhubaneswar dermatology wasn't possible. So only left was my NEET. I fill up the choices like first was Maulana Azad Medical College, second was IMS BHU, third was my own college, that is the Medical College Kolkata. So luckily or maybe unluckily, I got my first choice, the Maulana Azad, the prestigious Maulana Azad Medical College. I did my admission procedure there and I was mesmerized by the building infrastructure out there and the huge campus of 122 acres. I also like the Delhi city, except the pollution and some factors and the language barrier, fooding and some factors. I like the city also. And I came back home very much happily. Then comes the twist. Okay, so it was about 30th of or 1st of September maybe. So I developed 104-degree fever. This is not the reason, but I am telling in a sequence. I developed 104-degree Fahrenheit fever. It was not decreasing with paracetamol, oral paracetamol also. I had to shift to naproxen 250 after consulting SR of medicine. So after that it was reducing for 6 hours span only, but after that again fever was occurring. And my dad actually works in a discipline department, and in discipline department is not that if you don't have leave you can go and take leave like that. So he gave an information to his superior officers that he wanted for a leave for about 7 days for the for my admission, and so that with me my mom can settle in Delhi, because as I told that my dad belongs to a discipline department, so he has duties here and there. Means here and there he has duties every 7 days, and he would be posted for 7 days doing a duty of something. So if my mom stays there, she would have to stay alone, and my mom is very much dependent as she's a homemaker. So my dad told that you take your mom with you, and I also thought that if my mom would be there, it would be a support system and she could cook delicious food for me. So it was a plan that my mom would be with me and we would settle in Delhi. But the twist came that he was given an approval, verbal approval about the leave, but when he tried to apply for the leave, because
5th of September was our joining for residency. When he went to his superior officer and asked, they simply rejected him, and it was a very devastating state. Means what to do if he doesn't go, we can't go, we are dependent because we are shifting also. Not just admission, I have to work there, and in first year also there is no hostel available. From second year you get it. So it was a very very difficult situation what to do, but my dad chose the decision for me, for my career. He risked his career and he went to Delhi, and many calls came, many traumatic experiences he faced. I saw him in the train that he was completely tensed. Now we went to Delhi, and in Delhi, I had to do much of the work. Our family is dependent on my father, but I had to take more responsibilities because that time my father was very much tensed and in a stress situation because of his job, and there was a job risk also. So I did the things, I did the settling part. He accompanied me and helped me out, but it was majorly me that who was taking the decisions at that time. I joined Maulana Azad Medical College on 5th of September. I went there, and my experience when I went first after admission, seeing the building infrastructure, it was a whole lot different. How I am telling you, I met HOD. She was very much fine personality. I think from my first time experience, means first time seeing her. But when I came to know about the duty hours, it was very very much hectic for at least derma. Means it was more than medicine also. Firstly, it was 8 to 8 about every day, and every third and fourth day it was 36 hours. मतलब हफ्ते में 110 घंटे, 110 hours per week the duty was coming. और उसमें भी कोई इंटर्न नहीं था या फिर सिस्टर लोग सैम्पलिंग नहीं करती थी. द सैम्पलिंग वॉज टू बी डन बाय द फर्स्ट ईयर PGTs. द सैम्पलिंग and taking the reports and bringing them back. So it was a whole lot of hectic, and not much hands-on was also there, because in Delhi I came to know that there is 3 years SRship. Mainly the SRs used to sit with the faculties and PGTs used to sit with the SRs. There was hierarchy. It was not a big problem. But the main factor that I was shocked that there was the ND-YAG laser. Only one laser was available there, and the ND-YAG laser was also not functional. So in a central institute, laser is also not there for dermatological procedures. It was quite shocking for me, and I didn't find any difference from that of MCK. So I was a bit depressed. My dad called me when I was in the hospital, and he talked how was it going. So I told the duty hours. I was a bit skeptical, like that much duty hours doesn't suit to me. I needed the work-life balance. I mean, I need to go and hit the gym 1 hour, or else I get headache. Many factors are there. I don't get sleep in that factors I am not considering. So my dad called that come to the home. I went to the home, and he discussed that like this, if you work, your life would be completely destroyed. My father was the one who wanted me to get admission in Delhi, and now he was only telling that this is going to destroy your life, your personal life, and also your mom's, because you can't take care of your mom. Because if you are staying 24/7 like in the hospital, then who will take care of your mom? She doesn't know Hindi also. So means I thought that I would help my mom in shopping and all. So if I stay from 8 to 8 and 36 hours, who would take care of my mom? So questions were arising, and pressure was coming from his department that he has to leave in 1 to 2 days, and he couldn't return. Means he couldn't come and visit us. Previously he thought that he would get holidays, he would get leaves, so that he could visit every 2 months and help us settle more and see us. Like in Kolkata, he comes every month. So the family environment stays happy. So after that, if he can't come, then what would happen? And there is a high chance that I might succumb, because previously 2 PGTs have succumbed. Means they have left. Previous 2 years also 2 PGTs paying the bond money, they have left.
and my family, my father was not in a condition to pay 10 lakh rupees. There was a high chances that I have to leave due to the high duty hours and my father's pressure also from his duty, from his office. So it was means I was completely shattered and distressed that what to do, and should I leave Maulana Azad Medical College, my dream college? तो 6th और 7th रात को ऐसा ऐसा कुछ हुआ कि फाइनली वो डिसीजन लेना पड़ा कि आई हैव टू लीव मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। तो रात में क्या हुआ कि हम लोग सोए हुए थे, लगभग रात 1 बज रहा था, एंड सडनली द लाइट्स टर्न्ड ऑफ. So my mother my father thought that it's a load shedding or short circuit, anything kind of. But my mom told that see वहाँ पे तो lights है, तो फिर हम लोगों के घर में क्यों lights नहीं है? So my father went and I also went out to check if MCBs are okay. We saw our MCB was down. Only our room MCB was down and MCB was in a common place. यहाँ पे एक common place था, यहाँ पे हम लोगों का डोर था, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता था, मतलब दूसरा फ्लोर्स में, क्योंकि वहाँ पे एक ही कॉलोनी था मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के ऑपोजिट में, वो था कोटला फिरोज शाह कॉलोनी, और उससे दूर तो रह भी नहीं सकता हूँ, बिकॉज रात के 9 बजे को छुट्टी मिलेगा, उसके बाद कैसे जाके रह सकते हैं वहाँ पे। तो एक ही कॉलोनी था और यहाँ पे जो कॉमन स्पेस था और बाहर का दरवाज़ा हर टाइम खुला रहता था, क्योंकि वहाँ पे तो डॉक्टर्स ही रहते थे, तो वो लोग आना जाना करते थे, तो इसलिए बाहर का दरवाज़ा हर टाइम खुला ही रहता था. सो देयर वॉज द MCB, इट वॉज एक्सेसिबल टू आउटसाइड पीपल ऑल्सो, इट वॉज डाउन. तो पापा ऑन कर दी. आधा घंटा बाद में फिर से MCB डाउन हो गया एंड इट वॉज वेरी मच वरीसम. 1 दिन गया, 2 दिन गया, 2 दिन में 5 बार MCB ऐसे डाउन हुआ. तो अगर ऐसा कोई करेगा तो फिर पापा के रहने के टाइम में ही इज सच अ डेयर डेविल, उनके रहने के टाइम में ऐसा हो रहा है, तो वो चले गए अगर, तो और क्या क्या होगा. मतलब और क्या क्या हो सकता है. मेरा तो हफ्ते में 2 से 3 दिन 36 आवर्स रहेगा, मैं रात को रहूंगा नहीं. अगर मम्मी के टाइम में ऐसा हुआ, अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो फिर कैसे ऑन करने जा सकते हैं. क्या क्या रिस्क अवॉइड करता है किसी को नहीं पता, क्या हो सकता है. सो दिस वॉज द लास्ट नेल टू द कॉफिन. दिस वॉज द लास्ट नेल टू द कॉफिन कि यहाँ पे रहा नहीं जा सकता, ऐसे ही ड्यूटी लिया नहीं जा सकता, ऐसा हैरेसमेंट होता है तो रहा नहीं जा सकता. मैं डिपार्टमेंटल टॉक्सिसिटी मैं फेस नहीं किया था, हायरार्की था, मेरे को समझ में आया था. डिपार्टमेंटल टॉक्सिसिटी मेरे को समझ में नहीं आया था, बिकॉज आई वर्कड ओनली 2 days देयर, ओनली 2 days आई वर्क देयर. मेरे को जो सर्कमस्टेंशियल चीज़ें आने लगी, मेरे पापा का जॉब का जो मेन फैक्टर था वो था पापा का जॉब, उसके बाद था लॉन्ग ड्यूटी आवर्स, उसके बाद ये कि मतलब यहाँ पे रहा ही नहीं जा सकता. तो पापा तो बोल दिए कि मतलब आज को 7 तारीख को लास्ट डेट है फ्री एग्जिट का, मतलब पैसे नहीं देने पड़ेंगे, 10 लाख रुपए नहीं देना पड़ेगा अगर मैं छोड़ता हूँ आज को. तो मैं तो बोल रहा था पापा कि किसी तरह से क्या रहा नहीं जा सकता, मैं ट्राई करके तो देखता हूँ, अगर किसी तरह से नहीं होता है तो फिर छोड़ के आ जाएंगे, 10 लाख रुपए आप दे दीजिएगा. पापा बोले अभी तो पॉसिबल नहीं है 10 लाख रुपए देना, और अगर दे भी दिया तो तुम्हारा 1 ईयर वेस्ट चला जाएगा, जिसका बहुत ही हाई चांसेस है, तुम्हारे छोड़ने का बहुत ही हाई चांसेस है, क्योंकि फैक्टर्स ऐसे हैं. इट्स अ वेरी हाई चांस दैट यू वुड लीव द कॉलेज, अबाउट 90% चांसेस. एक तो है तुम्हारा ईयर वेस्ट जाएगा, दूसरा है मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगा, मेरे को छुट्टी नहीं मिलेगा. तुम लोग सेटल हुए हो, वहाँ से लौटाने का कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को कल को ही निकल जाना पड़ेगा ट्रेन पकड़ के. तो तत्काल का टिकट काट लिए थे पापा हम तीनों को, कल को ही निकल जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे डिपार्टमेंट में ऐसा प्रेशर आएगा कि मेरा जॉब भी जा सकता है. तो बहुत ही ख़राब सिचुएशन था. पापा का तो ऐसे ही टेंशन चल रहा था और मैं पूरा शटर्ड हो गया था, मैं मतलब मेंटली पैरालाइज्ड हो गया था कि सीट सरेंडर करूंगा मेरे को और कोई कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, डर्माटोलॉजी में स्टेट में कोई सीट खाली रहेगा कि नहीं मेरे को पता नहीं है. तो गए, पापा बोले कि वो लोग समझाने का शायद कोशिश करेगा कि मत छोड़ना स्टूडेंट सेक्शन, बट बोल देना एकेडमिक सेक्शन को कि यू वांट टू लीव. क्या बोला, आई वांट टू
प्रैक्टिकली। तो वो लोग बोले कि ये तो शायद सेकेंड काउंसलिंग में जो लोग भर्ती हुए थे उन लोगों के लिए लीव है, तो हम लोग कंफर्म कर लेंगे। हम लोग MCI को MCC को एक वो मेल भेजते हैं, सो दैट सेंड अ मेल, और हम लोग निकल के आए। एट द मीन टाइम HOD मैम भी बुलाई थी मेरे को BGT से बोली थी कि उसको बात करने के लिए बोलना, और हम लोग गए थे, मैं और पापा गए थे। तो HOD मैम ट्राइड टू कन्विंस कि इतना नाइट नहीं होता है, उतना ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, बट आई नो दैट वॉज ऑल आई थिंक फेक कंसोलेशन। आई एम श्योर अबाउट दैट, बिकॉज ड्यूटी का रोस्टर में तो सब लोगों का नाम रहता है, बट ड्यूटी फर्स्ट ईयर को ही करना पड़ता है। एंड और भी तो सर्कमस्टेंशियल चीज़ें थे, खाली ड्यूटी नहीं था, मेन था पापा का जॉब का ये, तो वो तो मॉडिफाई किया नहीं जा सकता, वहाँ का रहने का सिचुएशन मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद छोड़ के आ गए। ट्रेन में जब आ रहा था मैं तो बहुत ही ज़्यादा शटर था, मैं डिप्रेशन में चला गया था कि मेरे को कॉलेज मिलेगा कि नहीं। तो जब मैं देखा कि नेक्स्ट काउंसलिंग का सीट मैट्रिक्स निकला, तो लगभग मेरे को मतलब सारे ही कॉलेजेस में UR का सीट खाली था, स्टार्टिंग फ्रॉम SSKM, बीट RG कौर और बीट MCK डर्मा। तो मेरे को इनमें से चूज़ करना पड़ता कि कौन सा का डर्मा मैं लेना चाहता हूँ। तो बहुत कुछ कंसिडर करके मैं अपने कॉलेज में ही डर्मा ले लिया। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, डू आई रिग्रेट माई डिसीजन? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि MCK का डर्मा मैमसी का डर्मा से ढेर गुना बेटर है। जानता हूँ ये बोलने से मुझे लात जूते मिलेंगे, शायद मेरे सब्सक्राइबर्स घट जाएंगे, बट जो सच है मैं वो बोलने से कतराता नहीं हूँ। देयर इज नो डाउट दैट MCK डर्मा इज फार बेटर देन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज डर्मा। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर तुम मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में हो तो तुम जानते हो कि यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट भी परफॉर्म किया गया, जो अभी तक मैंने सुना है कि नीट PG का इंस्टीट्यूट में से खाली IMS BHU में होता है। वहाँ का NDAG लेज़र ख़राब था, बट MCK में NDAG लेज़र ठीक हो गया है। अभी 3.5 साल के बाद में ये वाला लेज़र ठीक हो गया है। NDAG लेज़र इज़ देयर, 2 पॉइंट्स। इंटेंसिव पल्स लेज़र इज़ देयर। हैंड्स ऑन इज़ मच मोर। एकेडमिक्स इज़ मच बेटर। एकेडमिक्स बेटर कैसे? क्योंकि वहाँ पे था खाली 2 को क्लासेस होता था, बट यहाँ पे क्या होता है कि शुरू में जाके ही PGTs का क्लासेस होता है हर रोज़, एवरी डे there is a PGT class. After that, in Monday, one of our academically active ma'am takes only first year's class, and in other days, that is Wednesday, HOD sir takes class. Thursday, the seminar is taken by the PGTs itself, and Friday we have quizzes or extempore. So सारी तरह के academic activities है, journal clubs है। academics में तो MCK का बेस्ट है, मैं बोल ही सकता हूँ, because here only the PGTs get the chance to teach, और हैंड्स ऑन बहुत ही ज़्यादा है। मैं अभी तक प्रोसीडियर्स कर चुका हूँ, लाइक रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, इंट्रालेजनल स्टेरॉइड्स, इन्हीं कुछ 4 दिनों में ही उसके बाद PRP इंजेक्शन, एक्ने का स्कार मैनेजमेंट, ये सब हैंड्स ऑन बहुत ही ज़्यादा है। मैं जानता हूँ यहाँ पे बॉन्ड है, दैट्स अ डिसएडवांटेज, बट एज अ होल dermatology is better in MCK than Mamc. Only one thing was better in Mamc, that is that it had special clinics. अभी तक हम लोग का स्पेशल क्लिनिक्स नहीं है, खाली लेप्रेसी का है, बट मैं सर को बोल के देखूंगा अगर ये पॉसिबल हुआ कि स्पेशल क्लिनिक्स हम लोग अलग से चालू करें। तो मैं जो सच बात है मैं वो बोलने से कतराता नहीं हूँ। अभी तक एम्स दिल्ली में से बहुत जन मेडिसिन सर्जरी लेके छोड़े हैं। VMMC में यू हैव सीन व्हाट हैपेंड, दैट 110 आवर्स करके ड्यूटी कराया था, 5 दिन तक घर नहीं जाने दिया था, सेलुलाइटिस डेवलप कर गया था, 2 जन छोड़ दिए थे। इन IMS BHU यू हैव सीन दैट इन ऑर्थो डिपार्टमेंट उन लोगों को थप्पड़ वप्पड़ मिलते थे, तो 1 जन छोड़ दिया है, या लॉस कर दिया है ये लोग, और वो लोग फिर से एग्जाम दे रहे हैं। मतलब इतना टॉप इंस्टीट्यूट से, दिल्ली से, हम लोग के कॉलेज में ही अभी 1 जन ऑर्थो छोड़ के आया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से। they have left for different reason, but it's happening, and the leaving rate or the seat surrendering rate is much lower in West Bengal, because the toxicity is not there in West Bengal. So जो सच है वो है, ये सब टॉक्सिसिटी, ये सब चीज़ें का बात तो हम बाद में किसी वीडियो में करेंगे।
और मैंने डायरेक्टली फेस नहीं किया है, इसीलिए टॉक्सिसिटी का पॉइंट मैंने नहीं उठाया है अपने वीडियो में। एंड आई थिंक ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो गया, बट मैं चाहता था कि मेरे जो लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं और जो लोग लॉयली मेरे वीडियो को देखते हैं, उन लोगों को ये बात सच सच समझना चाहिए कि क्यों मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज छोड़ा। एंड मैं आके यहाँ पे बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ, मैं MCQ में आके बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। वहाँ पे 110 आवर्स पर वीक में ड्यूटी था, यहाँ पे मेरा 40 to 48 आवर्स पर वीक में ड्यूटी हो रहा है। पैसे कम है मेरे को पता है, बट आई नीडेड द वर्क लाइफ बैलेंस एंड आई invested on YouTube and I am providing quality content to you. मैं आशा करता हूँ कि मेरा इंस्टीट्यूट चेंज भी हो जाए, बट यू वुड एक्सेप्ट मी एज हु आई एम. माई इंस्टीट्यूट डज नॉट डिफाइन who I am. My personality defines who I am. So if you like this video, do like and share that. I think I am the first YouTuber that who is telling that I have left a great institute for a state medical college. I have left a central institute for a state medical college. मतलब ये ऐसे छोड़े तो 100 लोग हैं, बट अभी तक किसी ने बोलने का साहस नहीं किया है, मैंने किया है. सो आई थिंक यू वुड लाइक दिस वीडियो, दिस कंटेंट दैट आई हैव शोन द करेज टू स्पीक अप. पहले तो 2 महीने करेज नहीं था, बट अभी करेज लेके आया हूँ, तो मैंने बोल दिया जो भी मन में था. लॉन्ग वीडियो हो गया है पता है, बट चलो एंड करते हैं. ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट PG, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर नीट UG ऑल्सो. इफ एनीवन इज वाचिंग मी, नीट UG के लिए भी तुमको ऑल द बेस्ट, तुम्हारे INICET के लिए ऑल द बेस्ट. मैं चाहता हूँ कि तुमको भी अपना ड्रीम इंस्टीट्यूशन मिल जाए और मेरे जैसा हालत ना हो जाए अंत में. ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय.